Hello everyone, welcome to Apti Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from two important newspapers. The first being the Hindu, and another is the Indian Express. So the most important news and editorial of the day will be discussed in this session. Let's get started with news topic list. Today is 23rd of March. The first news is panel asks ministry to study the scope of extending the PMGKAY scheme. Second, Union Cabinet approved MCD reunification bill. We'll see and understand the news with regards to General Studies paper 4, ethics paper as well. Third, Ukraine seeks direct talk with Russia. The second last news, most of the Gangas clean, claimed the Jal Shakti Ministry. And the last is an editorial needed an Indian legislative service. A brilliant editorial that is definitely expected to be asked in the mains examination. So we'll understand this editorial in detail. Apart from this, at the end of this video, there will be MCQ based question. These questions will be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And before I start, just to tell you about our UPSC CSE 2021 mock interview program. Congratulations to all of you who have qualified mains. Now this is the last stage of examination, which is very important and significant. So you need to prepare yourself with a good mock interview, right? And we at Apti Plus are putting our all endeavors to give you the right track, the right guidance in terms of the mock interview. You can join us by our eminent board members. For more details, you can refer to the contact number mentioned here, or you can mail your DAF at info.aptiplus.in, right? You'll be getting one-on-one session, personalized session, and free DAF analysis would be done. The recorded video and interview session would also be provided for you to have a self-analysis. So do check it out, and special attention has been given to the student or aspirants from West Bengal and Odisha. So वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने इसको रजिस्टर करने के लिए लिंक दिए हुए हैं. You can register yourself and get the benefit of this. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. So starting with the news session, before I start the session, just to give you an update with regards to the UPSC, what they have filed an affidavit with the Supreme Court. मैंने आपको पहले भी एक न्यूज़ बताया था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को रिकंसिडर करने के लिए कहा था कि क्या दोबारा एग्जामिनेशन ली जा सकती है वैसे बच्चों की दोज हु हैव नॉट अपीयर्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन हु वर एक्चुअली इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ द कोविड, राइट. बट सुप्रीम जो यूपीएससी है ना, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है सुप्रीम कोर्ट को कि कोई प्रोविजंस नहीं है री होल्डिंग द एग्जामिनेशन, राइट. So UPSC has categorically stated in its affidavit to the Supreme Court that we cannot conduct the examination. Although मेंस की रिजल्ट्स भी आ गई हैं एंड दे आर प्रोसीडिंग विद द इंटरव्यू, तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यूपीएससी इस पर कोई इंटरव्यू नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट भी अब इस पिटिशंस को रिजेक्ट करेगी. सो दोज ऑफ यू हु वेयर इन दिस पार्ट, मेक श्योर दे आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट एनी एग्जामिनेशन. आप फर्दर आराम से अपकमिंग जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी करें. Starting with the first news of the day, that is panel asks minister to study the scope of extending the PMGKAY scheme. This particular news is important for General Studies paper 2 in mains. That is welfare schemes for the vulnerable section of the population by the center and the states. The Parliamentary Standing Committee जो है फूड कंज्यूमर वेलफेयर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे, they have asked the department कि एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट की जाए टू फाइंड आउट द एक्सटेंट जहाँ पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को क्या और ज़्यादा एक्सटेंड किया जाता है, विच इज़ गोइंग टू एक्सपायर इन दिस मंथ, राइट. सो मार्च 2022 is the date which this would be expiring after an extension which was also given by the government. So the committee has expressed the concern over the huge dues which is pending with the Food Corporation of India by some of the department which is concerned with the Ministry of Consumer Affairs and Public Distributions, right. Now beneficiaries of scheme की अगर बात करें कितने लोगों को actual benefits मिली है, so under the scheme 759 lakh metric ton of the food grain was allocated to the state and union territories और उसमें 6,667 metric ton was lifted and 625 lakh metric ton were distributed in 5 phases to the poor. जिस तरह से इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुई थी, कोविड-19 में लॉकडाउन लगाए गए थे और पेंडेमिक की वजह से और भी जो लाइवलीहुड के लॉस हुए हैं उसको कंपनसेट करने के गवर्नमेंट ने इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए. द स्कीम हैज कॉस्ट गवर्नमेंट अ ट्यून ऑफ 2,68,348 crore rupees so far.
दिस नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू कोट इन एग्जामिनेशन, बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट फिगर पता होने चाहिए. Now, the scheme is likely to end by March 2022. So, this is the last month which the government would be continuing after a fresh proposal whether government is looking forward to extend it or not. अगर extend नहीं होती है तो ये मार्च के बाद ये पूरी जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट की स्कीम जो है वो एक्सपायर करेगी. Now, it is not clear whether the government is planning to extend this scheme further or not. So, the reason being the Parliamentary Standing Committee has asked to study the feasibility of continuation with the scheme. Now, panel ने efforts praise की है department की. So, the committee has applauded the government that they have launched प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो इकोनॉमिक रिस्पांस थी कोविड-19 की वजह से, जिस तरह के रिपरकशंस देखी गई इकोनॉमी में, उस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ. और ये एक ऐसी स्कीम थी इसमें 5 kg पर पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट्स थी. वैसे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू या फिर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसमें अंत्योदय अन्न योजना भी इंक्लूडेड है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड इंक्लूडिंग द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ द टोटल 19 months ड्यूरिंग 2020 to 2022. So in total the benefit was availed by the beneficiaries till 19 months. And let's see, we expect this to be extended for another month or two so that now the revival of the economy is coming to pace. अगर government को extend कर सकती है, that's well and good. If not, the government would definitely come for some compensation. Now, the Union Cabinet approved MCD Reunifications Bill. This particular news is important for General Studies Paper 2, Function and Responsibility of Union and State and Challenges Pertaining to the Federal Structure. ये एक ऐसी न्यूज़ है जो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 4 में भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इथिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हाउ फिजिबल इट इज़ टू मेक अ यूनिफिकेशंस ऑफ एमसीडी. जहाँ पे गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइजेशन की बात करती है, क्या वहीं पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस पे यूनिफिकेशन सही होगा? So an opinion based question can be asked in examination. So recently the Union Cabinet has cleared a bill that proposes the unification of 3 civic bodies in Delhi. Delhi is a union territories. So बहुत सारी administrative functions जो है that is being controlled by the central government. So Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022 is expected to be tabled in Parliament this week. Now what is the structure of local body? How does it function in Delhi specifically? जो national capital है that has 5 local bodies, namely by the region, that is the North region has North Municipal Corporation, East Delhi has East Municipal Corporation, and South Delhi has South Municipal Corporations. Again, we have Delhi Cantonment Board and New Delhi Municipal Corporation, which is also known as NDMC. राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फंक्शनिंग है जो यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस काम करती है. बट ये जो 3 है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ, नो, नॉर्थ east and south, this is going to be integrated, right? So the majority of Delhi area is covered by the north, south and east. तो जो 3 corporations हैं उनको अलग किया गया था 2012 में to have a decentralization method, और जहाँ पे पावर जो है एक तरफ सेंट्रलाइज ना हो, उस तरफ से कोशिश की गई थी गवर्नमेंट को इसको यूनिफाइड करने की. Now the MCD was trifurcated in 2012 to dilute the power of a single mayor in the city, right? Now again the same has been restored. So an opinion based question can be asked कि क्या centralization जरूरी है या decentralization जरूरी है इस तरह के municipal corporations पे. Now the Delhi Municipal Act 1957 was amended by the Parliament in 2012 to trifurcate and the unified MCD. Now issues and challenges, क्या क्या important issues और challenges हैं in this context. So over the year ये gap देखी गई है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बढ़ी हैं सिविक बॉडीज़ में, एंड द कॉर्पोरेशन वर नॉट एबल टू मेक द टाइमली पेमेंट एंड सैलरीज टू द एम्प्लॉइज, एंड स्पेशली जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलती हैं वो लोगों को नहीं मिल रही है. देयर बाय दिस इज क्रिएटिंग एंड सीरियस इम्पिडिमेंट्स इन द मेंटेनिंग ऑफ द सिविक सर्विसेज. So there are other challenges also which is coming with the functioning of the MCD, that is Municipal Corporation of Delhi. बट यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है, कोई पॉलिटिकल एंगल से आपको इसे नहीं देखना. यू हैव टू कंसिडर दिस इशू इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस एंड इट्स इफेक्टिवनेस इन डिलीवरिंग टू द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. Now, Ukraine seeks direct talks with Russia. This particular news is important for General Studies Paper 2, Effective Policies and Politics for Developed and Developing Countries. So, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऑफिशियली कहा है दैट ही वांटेड अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ रशिया. एक डायरेक्ट टॉक की ज़रूरत है वेयर ही इज़ रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द पार्ट.
एक्चुअली यूक्रेन वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन की पार्ट है, और यूरोपियन यूनियन के साथ साथ वो नाटो के अलाइंसेस को भी ज्वाइन करना चाहता था, विच was the main boat of contention between Russia and Ukraine. Now it has said that finally जिस तरह से एक रिफ्यूजी क्राइसिस राइज हुई है फ्रॉम यूक्रेन, he wanted कि जो सिटी की जो डिवास्टेशन है वो भी बड़ी है, many people have lost their life. Now the Ukraine president want a direct talk with the Russian president, that is Vladimir Putin. Now, what is the ground situation? How worst is the situation? As per the Human Rights Watch, they have reported that almost 2 lakh people are trapped in the city and described that who managed to escape in the freezing hellscape riddle of the dead bodies destroy the building. We have seen that temperature is pretty on the higher side, minus में टेम्परेचर है वहाँ पे, और बहुत सारी ऐसे जो लाइवलीहुड ऑप्शंस थे, बिल्डिंग्स हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है, सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया गया है बाय द अटैक विच वाज डन बाय द रशिया. The Russia has launched the invasion on Ukraine on 24th of February. It is almost 3 weeks जिस तरह से ये चीज़ें चल रही है. Almost 170 children डेथ हुए और बहुत सारे लोगों की भी डेथ हुई. 548 schools has been damaged and 72 buildings were completely destroyed in the attack. Now, substantial talk की ज़रूरत है. This is how a resolution can be there. India had abstained from the voting. India ने voting से abstain किया, but it has called for a negotiation effort on the table, right? So Russia said that it would like to see the negotiation with Ukraine, which is more active and substantial in nature. This is what the Russian government has to state. और रशिया की जो मिलिट्री है that appears to headway in capturing the key target. Specifically, they are targeting the Ukraine capital, that is Kyiv. सुमी जो एक important city है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा destroy कर ली गई है. बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यूएस की तरफ से की गई है. यूएस ने एक चीज़ों को ऐड किया वेयर दे हैव वांट कि रशिया इज कंसीडरिंग टू हैव अ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स यूज, राइट. तो ये एक वार्निंग आई है यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से, जो बिडेन की तरफ से, जिनका कहना है कि रशिया किसी भी क्षण किसी भी टाइम जो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है वो यूज कर सकता है यूक्रेन पे. So this is something very important development coming from this particular war or crisis going. तो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स को समिट करते हुए यूएस प्रेसिडेंट ने ये बातें कही हैं. सो वी हैव टू टेक ऑल द क्वेश्चन. द ग्लोबल ऑर्डर हैज़ टू बी इन अ सिंक्रोनाइजेशन, जहाँ पे इस तरह के जो एक्शंस हैं उनको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Now, most of the Ganga clean claims the Jal Shakti Ministry. This particular news is important for General Studies Paper 2. Government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from its design and implementations. So, Ministry of State and Water Resources ने अपने official statement में राज्यसभा को ये inform करते हुए बताया कि जो quality of Ganga है that was clean enough for bathing, capable of supporting the river ecosystem, and almost entire stretch of the river was sufficiently clean. This is what the minister has to say in its official statement to the Rajya Sabha. Now, dissolved oxygen की बात करें, एक indicators हैं जहाँ पे health of river की पता चलती है, and it accept the limit of bathing and the quality criteria. This is what the ministry has to state. Now, Central Pollution Control Board की जो report है, which I wanted to give you an update on this one. So the report of the CPCB वो 2018 में report के मुताबिक जो कुछ main river stream है that were extremely polluted, right? And there were 5 categories that was ranked between 1 to 5, with 1 most polluted and 5 the least polluted, right? तो इस report में category wise priority रखी गई, category 1 to category 4, और बहुत सारे स्ट्रेचेस थे जो कैटेगरी 5 के अंदर भी थे. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को देखते हुए और जो डीओ के डिफरेंसेस उसको देखते हुए अकॉर्डिंगली रेट की गई. तो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने अपने रिपोर्ट को उस स्ट्रेच में हाईलाइट किया. नाउ वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड फॉर एग्जामिनेशन is to understand the difference between the BOD and DO. What is biological oxygen demand and what is dissolved oxygen. BOD किसे कहते हैं? BOD एक ऐसी मेथड है जो मेजर करती है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन, राइट. जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर या फिर जो वाटर बॉडीज में जो उनकी यूटिलाइजेशंस हैं तो ये BOD के थ्रू मेजर करते हैं. दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स स्पेसिफिकली. Now it symbolizes the amount of organic pollution present in the aquatic system. तो आपसे ये डायरेक्ट स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है कि what is BOD and what it signifies. Now वही dissolved oxygen की बात करें, ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है जो प्रेजेंट होती है वाटर में, एंड द वाटर बॉडीज रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड अदर एक्वेटिक एनिमल. तो ये हेल्थ कंडीशन ऑफ रिवर को बताता है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन असेसिंग
the water quality because it influences the organism living body in the water. Now, National River Conservation Plan की अगर बात करें, so the National River Conservation Plan is a centrally funded scheme that was actually launched way back in 1995 और ये aim करती है to prevent the pollution of river, right? इस program के through river conservation efforts को implement किया गया and two important scheme, that is the National River Conservation Plan and NGRB, that is National Ganga River Basin Authority की भी formation की गई. Now, NCRB so far has covered this stretch of 34 river in 77 towns with 16 state, जहाँ पे जो sanctions cost है वो around 5,961 rupees की रखी गई है, 5,961 crore rupees. Now the other part, that is an editorial, very important and brilliant editorial that you must take a note because a mains question is expected on Indian legislative services, right? I'll be discussing everything in detail. Before that, this particular editorial is important for General Studies paper 2, Parliament and State Legislatures Structure, Function, Conduct of Business, Privileges and Issues arising from it. So what I'm going to discuss in this editorial, so I'll be simplifying the editorial into some important subheads like Secretary General since independence, independence of executive power and privileges of Secretary General, लोक सभा में किस तरह से फंक्शन हो रही है, effective role क्या होनी चाहिए पार्लियामेंट फंक्शन की, need for all India services and the way forward. So the entire editorial focuses upon the theme is the need for Indian legislative services. तो कुछ बैकग्राउंड की अगर बात करें, रिसेंट में जिस तरह से अपॉइंटमेंट हुई थी PPK रामाचंद्रुलू, एक सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए गए थे बाय द MK Venkaiah Naidu. He was the chairman of the Rajya Sabha and the appointment was made on 1st of January 2021. तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अटेंशन में आई थी क्योंकि जो मिस्टर PP रामाचुलू एक पहले ऐसे स्टाफ थे जो कि राज्यसभा के सेक्रेटरियल स्टाफ से लेकर के सेक्रेटरी जनरल के पोस्ट तक ऊपर गए थे. सो दिस शोज दैट डेफिनेटली टू हैव अ इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन वी नीड द पीपल हु इज एक्चुअली वर्किंग एट द ग्राउंड, राइट? जो बॉटम से ऊपर की हायरार्की में जो काम कर रहे हैं उन लोगों की फंक्शनिंग की इफेक्टिवनेस अलग होती है बशर्ते जहाँ पे हम बाहर से लोगों को डिप्लॉय करते हैं. We'll understand everything in detail. So till that, the appointment of the Secretary General was done from outside. जो भी retired bureaucrats हैं, जो senior IAS officer हो, IRS officers हो या किसी भी कैग के officers हो, उन लोगों को ही अपॉइंट किया जाता था. तो वहाँ पे फंक्शनिंग और इफेक्टिवनेस ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफिस पे भी सवाल उठाए गए. तो ये पूछा गया इस एडिटोरियल में कि क्या हम अपने जो लेजिस्लेटिव सेक्रेटरियल स्टाफ है या फिर कोई एक ऐसी कार्डर बनाने की जरूरत है जहाँ से हम लोगों को रिक्रूट कर पाए इसी पर्टिकुलर फंक्शन में. Now, Secretary General से इंडिपेंडेंस की अगर बात करें 1952 11 Secretary General were there and except for some of the lateral entry some were Secretaries General जो कि आते थे सिविल सर्विसेज के बैकग्राउंड से. In first Parliament, the Rajya Sabha has opted for the Secretary General S.N. Mukherjee, who was a civil servant. Right? You can see civil servant, especially the IAS officer, has been used by the center in many important organizations, be it is ministries or any important autonomous body as well. So 1993 में Secretary General of the Rajya Sabha were from the civil services and Ramachulu was the first 12th Secretary General who was from that secretarial staff itself. So the appointment of the recent Secretary General, that is PC Modi, is the current Secretary General of Rajya Sabha. He is an IRS officer and basically he is 13th Secretary General in the upper house for the first time. इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें, आर्टिकल 98 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड करती है स्कोप फॉर सेपरेट सेक्रेटेरिएट्स जो है दोनों हाउसेस के लिए, वेदर इट इज द लोकसभा और द राज्यसभा. सो फॉर दीज टू अ सेपरेट secretariat has to be there. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन है. So the principle in this article has led the secretariat to be independent from the executive government. Right? And a separate secretariat marks the feature of the functioning of a parliament democracy because this is the core or backbone of the functioning of a parliament, either it is Lok Sabha or a Raj Sabha. Now, power privileges of Secretary General. This is something very important for prelims examinations. तो जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, राइट? दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स. और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस वो एक्ट करते हैं एंड ही इज जस्ट थर्ड इन लाइन. राज्यसभा के जो चेयरमैन है और वाइस डेप्यूटी चेयरमैन के बाद इसकी रैंक थर्ड होती है. द सेक्रेटरी जनरल एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस लाइक हिज अ फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, immunity from the criminal proceeding and any obstruction breach would amount to the contempt of the office. जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, he is
for the both houses and mandated to work in parliamentary and administrative responsibilities. और एक prerequisites जो है सेक्रेटरी जनरल के लिए is to have a good knowledge of parliamentary procedures, practices and precedent. तो मोस्टली जो सिविल सर्वेंटेंट है वो इस पर्टिकुलर एरियाज में एक्सपर्टीज लैक करते बिकॉज सिविल सर्वेंट आर कंसिडर्ड टू बी द जनरलाइज्ड पीपल, दे आर नॉट एक्सपर्टीज ऑन एनी फील्ड. To make a efficient functioning of the Secretary General Office, we need someone who has actually invested a substantial amount of time, a substantial amount of career in the Parliament, right? तो ऐसे लोगों को लाने की जरूरत है. इस वजह से इस एडिटोरियल में एक इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विसेज की बात कही गई है. Now, Lok Sabha की अगर बात करें, so unlike Rajya Sabha, the Lok Sabha has 9 staff that has become the Secretary General. First Secretary General Lok Sabha में MN Kaul थे, and the President of promoting the senior most secretary officer of the Secretary General has made the pause and resume. कभी की गई है इसमें शुरुआत या कभी से रोक दिया गया. And to some has got the Secretary General post after their retirement as well. Now, effective role of Parliament functioning कैसे promote की जा सकती है? What should be the check and balances that government should promote? So to have an effective parliamentary polity, the role of Parliament is very important. जो उसकी executive administrative behavior है उसे देखने की जरूरत है. In other words, the Parliament has all reason for its surveillance, administrative, and Parliament must have a technical and human resources competency in effective body functioning, meaningful scrutiny, and executive accountability. Right. So a strong Parliament means more answerable to the executive. Right. जितनी strong Parliament होगी, उसकी executive के प्रति उतनी ही जवाबदेही होगी. And a strong bureaucracy persistence has not allowed the Parliament to be competent and robust institution enough. Now, need for all India services. This is something, the main theme of this editorial. There are 1,000 legislative body in India. अगर आप बात करें from lower to the higher level of the functioning, चाहे वो पंचायत हो, block level हो, जिला परिषद हो, municipal corporations हो, even state legislature हो, union parliament हो, at national level, everything needs a effective function, right? So despite a mammoth of law-making bodies, there is a lack in the common public recruitment and training agency at the national level. The Parliament and the state legislative secretary recruit their pool of bureaucrat separately. So this is a dire need of this country that we should have an all India services जहाँ पे एक exclusive Indian legislative services officer को recruit किया जाए. Now, the growth of modern government has an expansion for the activities that required matching development and laborious legislative exercise. Common all India cadre बनाने की जरूरत है जहाँ पे Indian legislative services is a must. This is what the editor has to quote. And a common services can build up an experienced legislative staff, enabling them to serve across local bodies and the union parliament. Now, कुछ वे फॉरवर्ड की बात करें जो कंक्लूड कर सकते हैं आंसर्स में. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राज्यसभा के पास ये पावर है आर्टिकल 312 में कि वो एक नेशनल इंटरेस्ट में एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है जहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने की पावर एक्सक्लूसिवली राज्यसभा के पास है. समथिंग विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो स्टेट इनेबल्स पार्लियामेंट टू क्रिएट द सर्विसेज, राइट. तो ये पावर सिर्फ राज्यसभा के पास है. इसमें ऑल इंडिया जो जुडिशियल सर्विसेज है उसको लेकर के भी बात हुई थी कि AIGS की फॉर्मेशन होनी चाहिए एंड द पावर हैज ओनली बीन एनविसाज्ड विद द राज्यसभा. यूनाइटेड किंगडम में जो क्लर्क हैं ऑफ द हाउस ऑफ द कॉमन हैज बीन अपॉइंटेड ऑफ द लेजिस्लेटिव स्टाफ पूल एंड क्रिएटेड अ सिविल पार्लियामेंट. So it's a high time for India to adopt such democratic institution practice which is being practiced globally. और बहुत ऐसे countries हैं, UK से हमने बहुत सारी चीज़ों का अडॉप्ट भी किया हुआ. तो ज़रूरी है कि इस तरह के सर्विसेज जो इंडियन लेजिस्लेटिव सर्विस है वो प्रमोट है या फिर उसी सेक्रेटरियल स्टाफ के जो ऑफिसर्स हैं उनको सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस तक लाया जाए. So this is how the way forward can be concluded. Now moving ahead with the MCQ questions of the day. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday question. For first question, the correct option is C. For second question, the correct option is A. Today's MCQ for practice, Bureau of Energy Efficiency. आपको बताना ये statutory body है Ministry of Power के अंदर, which was set up in 2002. Energy Conservation Act 2001 के through इसको establish की गई थी. It is mandated to implement policy and program and area of agency, conservation and efficiency. So you have to check the correct answer for this question. Second question of the day, Malabar exercise, something which was evident in the news. So this is an annual trilateral navy exercise between navies of India, Japan and US. It is an exercise held alternatively between Indian and Pacific Ocean. So you have to check for the correct answer. This was all about for the daily news and editorial analysis and the MCQ questions.
If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.